हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम मैथ्स रथ अकेडमी। सो आई होप कि आप लोगों ने अपनी लर्निंग स्टार्ट कर दी होगी एप्लीकेबल मैथमेटिक्स थर्ड की। और लास्ट क्लासेस में हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि ग्रुप की डिफिनीशन क्या होती है। तो आज हम ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, और हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स एलिमेंट होता है वो हमारा यूनिक होता है। मतलब देयर विल बी अ यूनिक इनवर्स फॉर एवरी एलिमेंट इन अ जी। ओके। सो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हम प्रूव करेंगे आज के लेक्चर में, और फिर हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे ग्रुप स्टडीज को। ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट रिजल्ट हम प्रूव करेंगे, दैट इज द इन अ ग्रुप जी देर इज अ only one identity element है, there is a only one identity element. Here you can say there is a unique identity element. Okay, so in a examination they ask that prove that the identity element is unique in a group. इस तरीके के क्वेश्चंस आपके arise हो सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। ओके, so let's write the proof for this. So तो आपको प्रूफ लिखना सीखना है कि हमारे पास किसी रिजल्ट का हम प्रूफ कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट बी स्टार्ट विद द ग्रुप जी। ओके, तो लेट जी be a group. You can also add together with binary operation. If you are writing star as a binary operation, तो you can write, या फिर इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो, that is your G and with this structure star. Okay, be a group. और सिंपली यू कैन जस्ट राइट जी बी अ ग्रुप, बिकॉज अगर आपने ग्रुप की बात करी तो देयर इज अ बाइनरी ऑपरेशन इज ऑल एग्जिस्ट देयर। ओके, तो वो एक इनबिल्ड यू कैन से कि देयर इज अ ऑपरेशन। ओके, तो उसको हम कंसीडर करते। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि हम लोगों का एक हमने प्रॉमिस करा था कि अगर हम जी वी आर टेकिंग एनी एलिमेंट्स ए स्टार बी, अगर हम ए स्टार बी लिख रहे हैं तो दैट इज आल्सो यू कैन जस्ट से कि ए इंटू बी। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इंटू डॉट भी लिख सकते हैं। तो दिस इज, इफ यू आर राइटिंग ए बी ओनली, इट मीनिंग दैट कि वी हैव द ऑपरेशन स्टार बिटवीन ए एंड बी। ओके, यू जस्ट रिमेंबर दैट। So, but here I will show that star will be here the binary operation. So here G is the binary operation. So let it possible two elements are identity, which like looks like a identity elements. So suppose I'm just taking, suppose E or E dash, okay, or even. Okay, so suppose uh, E1 and E2 are the identity elements. ओके, सो हमने मान लिया कि E1 E2 आर द आइडेंटिटी एलिमेंट्स। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, सो वी हैव व्हाट वी हैव, it will operate with each and every element. It means even if you're operating with some element A, or A with this E1, you get A for all this. This is equation 1, or this is true for all A in G. Okay, similarly if you are because we said that E2 is a identity element. Okay, so you can just have E2 star A or A star E2 is just equal to A. This equation 2. This is also for all A in G. Okay, so this two, क्योंकि हमने E1 और E2 को आइडेंटिटी एलिमेंट बोला है, तो इट मीन्स इट विल बी होल्ड फॉर all all 8 which satisfy the condition of identity element. Okay, now simply put this A is equals to E2 in the first equation. तो हमको क्या मिलेगा, दिस इज E1 स्टार E2
is just equal to uh, this is E2 star E1 and that is equals to E2. So this is from the first equation we with this, because this is true for all a हमारे पास E1 और E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो भी हमारे पास G के अंदर मौजूद है, ये हम मान के चल रहे हैं, तो इट मींस इट विल बी इक्वल टू E2. ओके, सिमिलरली एंड put this A is just equal to E1 in the second equation. So you will have, this is your E2 star E1 is equals to E1 star E2 is just equal to E1. तो you can see, ध्यान देना आप यहाँ पर, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि E2 स्टार E1 इज जस्ट इक्वल टू E2, और यहां पर भी हम कह रहे हैं E2 स्टार E1 इज जस्ट इक्वल टू E1. तो फ्रॉम 1 and 2 you can just say easily, so from sorry 3 and 4, from 3 and 4 you have this E1 is just equal to E2. So हमने तो डिफरेंट E1 E2 मान के चले थे, बट दे आर सेम, नॉट दे आर डिफरेंट. Okay, so it means the identity element will be unique. So this implies in a group G, identity element is unique. Is unique. Got it? So there will be no two element will be identity. There only one element will be play the role of identity. Okay. So next result की बात करते हैं. So cancellation loss की बात करते हैं. In a group there is a left cancellation and the right cancellation holds. Okay, the mixed cancellation is not hold for a group, because group, if the group is abelian then mixed cancellation is also hold. Okay, so let's write the result, write a theorem, then we prove it. Okay, so in a group we just write in a group G, the right and the left cancellation, the right and the left cancellation large hold. So that is, you can say that BA is just equal to CA. So you can cancel this A, because A lies in the right hand side. So this implies B is equals to C. Okay, and we are just taking here, this is AB is equals to AC. Here A is multiplying from the left. So this implies you can have, this is simply B equals to C. So whatever element is multiplied from right or left, in both sides it will be cancelled. Okay, so how we will prove? Let's write the proof of it. So this is a very simple proof. Okay, so we are not going to write operation star all the time. We can just simply write the expression. सो गैलियन की टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर ऑपरेशन मेंशन नहीं करते हैं, तो बट आपको पता होना चाहिए कि देयर इज अ बाइनरी ऑपरेशन बिटवीन ए एंड बी. व्हेन यू आर सेइंग द मल्टीप्लिकेशन लुक्स लाइक अ मल्टीप्लिकेशन, बट देयर इज नॉट मल्टीप्लिकेशन, देयर इज अ बाइनरी ऑपरेशन विच इज डिफाइंड फॉर द ग्रुप. जो भी जनरल हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होगा. ओके, it means here you just remember BA means we have B star A, some operation is there. Okay, so so
So I'm not going to write all the time that we are taking a group G and we have some elements A, B, C in this way. Okay. So we have to start proving it. Okay. So suppose we have this is BA is just equal to CA. And we know that for every element A, we have an inverse element in G. तो उसको हमने डिनोट करा है A इनवर्स से. तो लेट दिस A इनवर्स, इसको हम ऐसे सिंबोलिज्म देते हैं. दिस इज सिंबोलिज्म फॉर द इनवर्स एलिमेंट फॉर ऑफ A. ओके. तो लेट A इनवर्स be an inverse of A. Of A. Okay. Now in this expression, we will just multiply from the right. Okay. So then you can just say, then multiplying on right by A inverse. अगर इसको हमने 1 मान लिया है in 1. Okay, so you can just have looks like this na. A inverse is just equal to CA into A inverse. Okay, and you can imply this because by associativity we have a group, and in a group there is a property, the associativity is hold for the operation. Okay, so we can just have B A inverse and is equals to C A inverse by associativity property. By associative property. Okay, and you know that when a element is multiplied with its inverse, you operated with this inverse, you will get identity element. So you can just write here, this is B identity E here and C in the identity E here, where you can just say where E is the identity in G. ओके, सो यहाँ पर ई आइडेंटिटी, और किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, दैट इज सिंपली एलिमेंट्स बी एंड सी. सो दिस इंप्लाइज कि लेफ्ट राइट कैंसिलेशन होल्ड्स है ना. ए हमारे पास हमने ए के इनवर्स से दोनों तरफ से हमने राइट मल्टीप्लिकेशन कर दिया और वी गेट द आइडेंटिटी एंड वी जस्ट प्रूव्ड दैट बी जस्ट इक्वल टू सी. So we can say, so we have this is if BA is just equal to C of A, so this implies this is B is equals to C by right cancellation. Okay, now let's talk about the left cancellation. So similarly, we can also prove. So now this is A of V. A of V is equals to A of C. So this is your A of V is just equal to A of C. ठीक. So the multiply just take the rubber here. So multiplying on the left by A inverse. Okay, so you will simply get what you get from here. This is simply you get, this is your A inverse, okay, of A of B is just equal to, this is your A inverse of A of C. And similarly again by associativity you can just say A inverse A of B is just equal to, this is A inverse A of C by associativity. By associativity. Or from here you get, this is your identity into B
is just equal to identity into C. So this implies you get B is equals to C. So this is your left cancellation. If the a number a element is multiplied from the left side, it will be cancelled. So we can easily say that is your AB is equals to AC is implies B is equals to C. Got it? Because by the left cancellation. So we proved the left cancellation or right cancellation. So whenever we use it, we are now free to use. Okay, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे. Okay, so this is the we proved that left cancellation and the right cancellation in a group is exist. But mixed cancellation is not possible in general. If the group is abelian, then mixed cancellation is hold. Mixed cancellation means if A into B is just equal to C into A. मतलब इट मीन्स एक में जो है राइट तरफ से मल्टीप्लाइड है, एक में लेफ्ट तरफ से मल्टीप्लाइड है, तो इसको आप कैंसिल जनरली नहीं कर सकते इन अ ग्रुप. अगर ग्रुप हमारा अबेलियन है देन यू कैन एबल टू, बिकॉज ये हमारा कम्यूट कर जाएगा. इफ अबेलियन है तो कम्यूट कर जाएगा, इट मीन ए सी हो जाएगा और देन यू कैन एबल टू कैंसिल इट. ओके, सो इन जनरल हम नहीं कर सकते, बट लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन इज होल्ड्स. सो नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ. The inverse element in a group is unique. So for each element A in a group G, there is a unique element B in G, such that this is AB is just equal to BA is just equal to identity element. Okay, so for each element A in a group G, we have a unique element B that is called inverse element, such that AB is equals to BA is equals to A, जिसको हम क्या बोलेंगे, that is inverse for it. So let's prove this thing. We have no different element, we have only one element. Okay, so in short you can say inverse for each element is unique. You can write like this. Okay, so let's prove. So let G is a group. Let G be a group. Operation is understood. There is some binary operation. So G be a group. Okay. So let it possible. So suppose that कि हमारे पास B and C, there are two elements are the inverses of A. Are both are inverses of A, which are both are inverses of A. तो हमारे पास B और C दोनों इनवर्स है. अगर दोनों इनवर्सेस है तो ये दो कंडीशन फॉलो करेंगे. इट मींस दैट दिस इंप्लाइज, then we have easily, then you can say this is A और B को मल्टीप्लाई करोगे you will get identity, and if you are multiplying A with C you will get identity. Obvious सी बात है, because C is also an inverse element and B is also an inverse element, then A into C is equals to identity and A into C is equals to identity. So this implies A और C
विल बी इक्वल, मतलब ये आइडेंटिटी के इक्वल है, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल है, इसका मतलब ए बी इज जस्ट इक्वल टू ए सी, यू कैन जस्ट से AB is just equal to AC, and we know the left cancellation rule hold. Okay, तो लेफ्ट और A और B कैंसिल कर देंगे, तो दिस इज A से A कैंसिल कर देंगे, then you get B is equals to C. So by left cancellation law, by left cancellation. Okay, so क्योंकि हमने पहले प्रूव कर चुके हैं कि देयर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, तो वी कैन इजिली यूज दैट रिजल्ट. ओके, तो यहाँ पर uh, हाँ, B is equals to C. It means there will be no two different element. There will be a unique element. B will be there. Okay, B, because अगर हमारे पास कोई भी other element exist करेगा, तो by this process we can able to prove that both are same. Okay, so this implies there is a unique element B in G, that is you can say AB is just equal to BA is just equal to E. Oh, and B is called the inverse of A, denoted as, हमने बताया नहीं था, A इनवर्स ऐसे लिखेंगे, है ना, इससे डिनोट कर, दैट इज सिंपली बी हियर. ओके, तो दिस इज प्रूफ फॉर द इनवर्स एलिमेंट इज यूनिक. अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव कर, अगर हमारे पास मान लो कैंसिलेशन लॉ की प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास, हमने अभी तक उसको नहीं प्रूव करा और हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, और फिर हमें प्रूव करना है कि ये एलिमेंट यूनिक, तो इसको हम दूसरा तरीका भी आपको बता दे रहे हैं प्रूव करने का. मेथड सेकेंड. सो सिंपली लेट इट पॉसिबल, ऐसे करें, लेट इट पॉसिबल B and C are the inverses for A which is belonging to G, है ना. तो they are B and C are the inverses for G, for A. Okay, तो दो इनवर्स एलिमेंट है, तो this implies, so we have कि ये हमारे पास अगर ए बी से ऑपरेट होगा या बी का ए के साथ होगा, यू विल गेट आइडेंटिटी एलिमेंट बिकॉज दिस अ प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स. Similarly, you can just have A into C is just equal to C into A just equal to identity. This is equation number 1 and this is equation number 2. तो दो इन्वर्सेस हैं, तो वो आपस में मल्टीप्लाई करके क्या दे देंगे, आइडेंटिटी, आपस में ऑपरेट होके आइडेंटिटी देंगे. यही इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है, इन्वर्स एलिमेंट की बात ही यही होती है कि एक एलिमेंट देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट B which multiplied with A from left and right and it gets the identity element. Okay, uh, now start with the B. I'm just starting with B. और you know that कि इस B को हम ऐसे लिख सकते हैं, B into identity, where E is the identity of G, है ना, G की आइडेंटिटी एलिमेंट है. तो इस, हम ध्यान दीजिएगा, इस B को हम ऐसे लिख सकते हैं, B into आइडेंटिटी. फिर हमको इस 1 और 2 जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, इनमें से इस आइडेंटिटी की वैल्यू रखनी है इन इन दिस एक्सप्रेशन. जैसे बी ए है या फिर ए बी है या ए सी, तो हमें सी, क्योंकि हमने बी को यूज करा है, तो हमें अभी सी को इंक्लूड करना है. तो वी आर गोइंग टू राइट, तो इन द प्लेस ऑफ दिस आइडेंटिटी एलिमेंट विच यूज दिस वैल्यू, use this value. I'm just using this value, A into C. Okay, so in the place of this identity element, you can use this expression A into C. Okay, and now
Now you can just write here, because I used the value of expression E from the equation 2. So you just write here in the bracket from 2. Okay. Now by associative rule, you can just write here BA into C by associativity. Now B into A will be equal to identity from the equation 1. B into A is just equal to identity. So this is your identity into C. इसको लिखिए from 1. And now identity with the any element gives the C. So from here you be able to prove that is B is equals to C, but without using the cancellation law. ठीक है, तो आप इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं. तो दिस implies unique inverse exist. This implies inverse element exist. ओके. सो क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर हो गई. तो नेक्स्ट नेक्स्ट रिजल्ट प्रूव करते हैं, नेक्स्ट थ्योरम. तो नेक्स्ट थ्योरम ये है कि if you are want the inverse of some product element, inverse of some A into B will be equal to the inverse of B into inverse of A. So you just write here, for group elements A and B, that is your AB inverse is just equal to B inverse into A inverse. ओके. सो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इफ यू आर सेइंग कि A इंटू बी जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी, तो दिस इंप्लाइज यू आर सेइंग दैट द इनवर्स एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू B, एंड द नोटेशन फॉर द इनवर्स एलिमेंट ऑफ A वो ऐसे चलता है ना. तो इसका मतलब A का जो इनवर्स है दैट इज योर B. तो अगर हम कह रहे हैं A इंटू बी का इनवर्स होल इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, इट मीन दैट we we want to prove that A into B is just equal to B inverse A inverse gives the identity element. Okay, so simply इसको आप प्रूफ लिख सकते हो. सिंस यू कैन जस्ट से, सिंस अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें से A B, ये एक हमने पास एज ए एलिमेंट ले लिया और दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने B इनवर्स A इनवर्स. ओके, एंड we have a associativity rule. तो from here you can just write here A B इनवर्स ऑफ A इनवर्स, है ना, बाय एसोसिएटिविटी, बाय एसोसिएटिविटी. तो जब हम एसोसिएटिविटी करा तो बी इनवर्स इज टुगेदर, और ये हमको क्या दे देंगे, आइडेंटिटी. दे गिव्स मी आइडेंटिटी एलिमेंट. यहाँ पर लिख दीजिए वेयर ई इज द आइडेंटिटी. क्लियर. और आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ आप कोलैब कर सकते हो. तो आइडेंटिटी ए के साथ या फिर ए इनवर्स के साथ इट गिव्स ए इनवर्स, और फर्दर ये आपस में मल्टीप्लाई करके क्या दे देंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट. तो यहां से प्रूफ क्या होता है, दिस इंप्लाइज ए बी एक एलिमेंट था, दूसरा एलिमेंट है हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स, दैट गिव्स यू आइडेंटिटी. तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सेस हैं. दिस इंप्लाइज ए बी का इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, बी इनवर्स ए इनवर्स. ओके, so this is in a reverse order, so you can say inverse is open for the reverse order. okay, reversing में तो इसको हम रिवर्सल लॉ भी के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम बोलते हैं सॉक्स सू प्रॉपर्टी भी नाम से जानते हैं, है ना. कि जैसे शूज को हम पहनते हैं फिर उतारते हैं, तो किस तरीके से, तो वो पहले वो रिवर्स ऑर्डर में चलता है ना. अगर मैं शूज को पहनना है तो पहले हम सॉक्स पहनेंगे फिर हम शूज पहनते हैं, फिर जब हमें उतारना होगा तो पहले हम शूज उतारेंगे फिर हम सॉक्स उतारेंगे. ठीक है. सो ये उस समय से हम सॉक्स शू प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं.
तो हमें ये याद रखना है, इफ वी हैव two elements A and B and we are operating together, we get another element. The inverse of this element will be equal to the in the reverse order inverses of B and A in this way. Okay, so this is the, so we can simply prove, multiply this AB with the B inverse A inverse, you get identity element. It means that the inverse of AB ka whole inverse is just equal to B inverse A inverse. So this is a simple proof. Okay, तो आई होप कि ये प्रूफ्स आपको समझ में आए होंगे। फिर इनको आप प्रैक्टिस करिए, और एक चीज जो आप हैबिट डालिए कि जब जिस भी प्रॉपर्टी या जिस भी डिफिनीशन का आप यूज करिए, तो आप राइट साइड में मेंशन, जैसे हमने लिख दिया ना, मैंने यहाँ पर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से हमने इनकी ब्रैकेट्स चेंज करे, तो यू जस्ट राइट बाय एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, है ना। उसके बाद हमने आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस करा, तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया वेयर इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो इस तरीके से आप चीजों को पूरा क्लियरली आप समझिए पहले, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए लिखने की। और आपको चीजें, आपको मजा आने लगेगा पढ़ने में, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से आप काम करिए सभी बच्चे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम सब ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमारे पास ग्रुप के सब ग्रुप्स क्या होते हैं, एंड देन वी विल स्टडी द मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू द ग्रुप थ्योरी। ओके, थैंक यू सो मच, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप राइटिंग एज वेल। ठीक है, आप केवल वीडियोस को ना देखें, आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करिए। और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर हम पढ़ा दें, जितना भी समय मिलता है उसमें, और अच्छे से आपको करना है। ठीक है, तो और आप यहाँ के लेक्चर्स जो हमसे आप पढ़ रहे हैं, इनको आप बिल्कुल भी लाइकली ना लीजिए। आई एम नॉट शॉर्टकट, आई विल जस्ट टीच यू हियर इन अ डिटेल, सो यू जस्ट लर्न बाय सेल्फ एंड विथ मी। ओके, थैंक यू सो मच।